All right, wish you a very good evening, ladies and gentlemen. You're all welcome to today's edition of Sales Ki Pathshala. And the topic that we have taken up today is how do you make best use of Pinterest for your digital marketing or for your social media marketing. So before I begin the program, let me get a confirmation from all of you. Is it all clear? Audio, visual, everything is clear? Just give me all clear on the chat box. Okay, can you just give me all clear on the chat box? Okay, thank you, Ritesh. So we are going to talk about social media marketing and we are going to focus on Pinterest. Now, I meet a lot of people who have heard about Pinterest, but they have never used Pinterest. I also meet a lot of people who have not even heard about Pinterest. So it's very important for us to understand, because you see, ladies and gentlemen, there's so much to do on internet that more often than not, we end up investing our time on the wrong platforms. So there is a lot of time we invest on Facebook and LinkedIn, but we do not invest any time on sites like Pinterest. So it's important to understand the importance so that we know exactly how we can optimize our time. Because I know that all of you are into sales, so you have to invest a lot of time on the field. Having done that, you are left with very little time to be invested onto the social media. So whatever little time you have to invest in the social media, you got to understand as to how exactly you could take it forward on social media through Pinterest. So the first important thing to understand is the name Pinterest has come from you pin your interest. So the first important thing is what is your interest? And you have to go to Pinterest and tell Pinterest as to what exactly is your interest. So let me stop the screen here and let me quickly go to Google. And so let me quickly go to Google. Can you see my Google screen, guys? I will just check out. Okay. So I want to quickly take you to Google. Right. So I'll take you to Google and I'll open Pinterest.com. Okay. So I go to Pinterest.com. And since I'm logged into my account, so let me log out of my account. Okay, let me log out of my account so that when you go to Pinterest, how will it look? This is how it will look. So when you go to Pinterest, so you can see this is the home page of Pinterest and there are a lot of pins. You can recall that when you were a student in a college and you used to go to your college notice board, there were a lot of notices which were pinned up on your notice board. Am I right? And you used to look at those notices which were of interest to you. So when we come to Pinterest.com, you see there are a lot of notices. There's something of about Arijit Singh, about writing a book. You see about email marketing. So there is actually no topic in the world on which you will not have pins. So each of this is a pin. And different people who are interested to market or who are interested to voice their opinion on that particular topic will create a pin. So you see there's this gentleman who has created a pin on how to solve high shoulder fix. Maybe they have a cramp on the shoulder. And there's this gentleman who has created a pin on Mohammed Rafi. And there's this gentleman who has created a pin on billionaires, guitarists, 7 deadly sins of sales. So all kinds of pins are there. Okay. So first what you have to do, you have to go to the search engine. So there is a search engine for Pinterest. And you have to write down as to what is the topic of your interest. Okay. So we have a lot of people from JJ Plast Alloys here today. So let me write here master batch.
So let me write here master batch as my topic of interest, and it gives me master batches, master batch color, and master bath. No, I'm not interested in master bath. So I'm interested, let's say I'm interested in color master batch. So when I click on color master batch, so you see I get a lot of pins. So there is a pin from Rajiv color master batch. There is a pin from, okay, Rajiv, it's all Rajiv, no JJ plus Telois here. Oh, you see how people are you making use of Pinterest. I'm just rolling down and I can see Rajiv master batches. I can see MG polyblends. I can see MG polyblends. I can see a lot of Rajiv master batch. Then I can see, oh, this is also Rajiv plastic. Okay, good. So can you see, guys, that I'm just rolling down and different companies have created different pins. So there is this company called Sugo, anti-static master batch. There's this company called Jewel, okay, a Chinese company maybe. So there are a lot of pins. Now, there's some company called sarsoli.com. And so I'm focusing on master batch because most of the participants here today are from JJ Plus master batch. So you can see mobile master batch private limited, another pin. Okay, so you get to understand that there are so many pins. Now let's assume that you like this Rajiv color master batch pin. So what do? You click on this. Now the moment you click on this, you see what happens. There is a good, nice image of Rajiv color master batch. And there is this gentleman called Mr. Hardy Singh, who probably is an employee of Rajiv master batch. Now, if you want to follow him, you can click on follow and you can, so whenever Hardy Singh posts anything on master batch, it will come to you as well. The important thing for you to understand here is that the website address has come here. Can you see the website address here? Which means that anyone who comes to Pinterest and searches for his keywords and falls in love with a pin, opens that, something what we have done just now, and he gets the website address of the company. And if he clicks on the website, it goes to the website of Rajiv Plastics company. And if assuming that I'm a consumer of master batch, I have gone to Pinterest, I have searched for Rajiv, now I have come to the website of Rajiv. Now maybe I will check out the different products of Rajiv Master Batch, and maybe I'll send an email or I'll send an inquiry, and I would have raised a lead for Rajiv Master Batch. So if you have understood exactly, let us now move forward with our topic. So Pinterest is a website where you can write your interest and the site will give you a lot of images or pins. You can select the pin of your choice and put it on a board of your choice. Now, what is a board of your choice? So, Jaisa, the moment I told you that there is a notice board in your college, and let's assume that there is a notice board in your college room or in your hostel room. So, similarly, on Pinterest, you can open your own account and you can create your own notice boards. Now, when you create your own notice boards, either you put pins of your own choice there, or you go to your competitors or anywhere on the internet, and whatever pin you like, you can put them on your own board. So I'll quickly show you how to do it, but let's move ahead slightly on this program and understand as to how exactly Pinterest can be of great use to people. So if you see, when you go to Pinterest, you belong to one of these three categories. Either you are a consumer, or you are a seller, or you are a marketer. So if you are a consumer, then Pinterest is a library of ideas for you.
It's a library of ideas, and not necessarily master batch or your work. If you are doing the interior design of your house, and if you are trying to look for a nice funky idea for your dining table, or how do you arrange your dining table, let's understand whether LinkedIn can, I mean, sorry, whether Pinterest can help us for that or not. So let me quickly jump to my desktop and let me quickly open Pinterest again. Okay, I hope you guys can see Pinterest there. Let me check the chat box. No questions for me. Okay, put your questions on the chat box if you have any. So what do? I come to Pinterest. Okay, let me open the home page of Pinterest. And let's assume that I'm making a dining table in my house. So I write dining table arrangement. Okay, I write dining table arrangement, which is, I not only want to know my dining table, but I also want to see how to arrange my dining table. And there you get a whole lot of design ideas. You see, if I scroll down, there are so many ways in which you can keep your dining table. So this is, you take, if whichever way you like. Suppose you scroll down and let's say, which one do you like? Let's say you like this idea. Okay, so if you like this idea, just double click there and the pin will open. You see, and when the pin opens, the website of the company which has put that pin is also there. So if you like this and if you want to know that where can you buy this from, you can click on this website here and straight away it takes you to your website. So it's not only about your business, it's all about your ideas, business ideas, anything. You see, now I have come to the company which had put that pin there. So you get an example coming back to my presentation on this. You get an idea that if you are a consumer, then this is a library of ideas for you. If you are a seller, then it is a marketplace. You know what we call mandi? So Pinterest is like a mandi. जिस तरह से एक मंडी में जाके अलग अलग विक्रेता अपने सामान की नुमाइश लगाते हैं, वैसे ही ये भी एक मंडी है दोस्तों, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स की नुमाइश लगाते हो और ग्राहक उस पे आता है, आपकी नुमाइश पसंद करता है, आपके पिन पे क्लिक करता है और आपके पिन के थ्रू आपके वेबसाइट तक पहुंच जाता है और आपके लिए इंक्वायरी जनरेट करता है। और खास करके जो लोग एक्सपोर्ट्स के बिजनेस में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज Pinterest इज अ वेरी पॉपुलर साइट इन यूएस, इन यूरोप. It is the 17th most popular site in India, but in US it is the 4th most popular site. In Europe it is the 8th most popular site. There are 900 million followers of Pinterest. So I'm sure you understand the importance. So if you are a seller, Pinterest is a marketplace for you. If you are a marketer, then Pinterest is a source for backlinks. And what do I mean by backlinks? अभी अभी आपने देखा कि जब मुझे वो डाइनिंग टेबल पसंद आया, जब मैंने उस पिन को खोला तो वहां पे उस कंपनी का वेबसाइट था, मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया एंड इट टुक मी, इट क्रिएटेड अ बैकलिंक एंड टुक मी टू द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, राइट? So these are the three ways in which you can use the Pinterest. You can use it for all the three. So all of you who are sitting in this program, you are also a consumer, you're also a seller, you're also a marketer. Fantastic. Now let's take it further and understand what are the 5 steps to start using Pinterest. So if you are a new user, follow these steps. Step number 1, you have to go and open an account, right? Once you open an account, step number 2, go to the search engine of Pinterest and write the keywords of your interest. आपको किस चीज में पसंद है? जैसे अभी अभी आपने देखा कि हमने मास्टर बैच डाल के देखा, we took out all the pins of our choice. तो open the account, then select the pins of your choice. जैसे जैसे आप अपने चॉइस के पिन सेलेक्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे Pinterest को पता चलता जाएगा कि आपकी इंटरेस्ट क्या है. और the artificial intelligence software of Pinterest will automatically start directing those kind of pins to you, right?
एक बार आपने पिन सिलेक्ट कर लिया तो आपको अपनी अकाउंट, जो आपने अपना अकाउंट बनाया उसमें जाके बोर्ड्स क्रिएट करने हैं। याद रहे नोटिस बोर्ड, और ये नोटिस बोर्ड कॉलेज का नोटिस बोर्ड नहीं है, ये आपके बेडरूम का नोटिस बोर्ड है। तो जैसे कॉलेज में एक जनरल नोटिस बोर्ड होती है, वो पिंटरेस्ट है, और आपके बेडरूम में जो आपकी नोटिस बोर्ड है वो आपका अकाउंट का पिंटरेस्ट। So you have to create boards on your personal account, and when you have created boards on your personal account, you can, whatever pins you have selected, you can pin them there, and then you start enjoying Pinterest. आइए इसकी एक छोटी सी नुमाइश, इसकी छोटी सी एक डेमो कर देता हूं, so that all of you can understand what exactly I mean. So I go to Pinterest, and let me go to the home page of Pinterest. Okay, good. और इस तरह से Pinterest खुल गया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपनी चॉइस के टॉपिक्स यहाँ पे लिखूंगा। जब मैं अपनी चॉइस की टॉपिक लिखूंगा, जैसे मैंने आपको जैसे मान लीजिए कि मेरी चॉइस की टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग, एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूं तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी पिन्स आ जाती हैं। अब मान लीजिए मुझे ये पिन चूज करना है, तो मैं इस पिन को चूज कर लूंगा। और ये पिन बनाने वाला कौन है, तो voxo.com ये पिन बनाने वाला है, मिस्टर गणेश तिवारी उनका नाम है। 140 लोग उनको फॉलो करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा पिन तो आप भी इनको फॉलो करने लगिए। आपने फॉलो में दबा दिया तो आप उनके फॉलोअर बन गए। तो दोस्तों इसी तरीके से लोग आपके फॉलोअर बनते हैं और आप लोगों के फॉलोअर बनते हैं। और इसके बाद में स्टेप नंबर 3, आप अपना अकाउंट खोलेंगे। जैसे ये देखिए मैंने अपना अकाउंट खोल रखा है। तो एज्यूम कीजिए कि आपने अकाउंट खोला, मेरा अकाउंट संजय फॉर सेल्स के नाम से है। तो जब मैंने अपना अकाउंट खोला, थोड़ी सी स्लो है इंटरनेट, सो मेरी अकाउंट खुल गई। अब मेरे अकाउंट पे आपके पास ऑप्शन है कि यू कैन ओपन अ बिजनेस अकाउंट एंड यू कैन इवन ओपन अ नॉर्मल अकाउंट। तो ये बिजनेस अकाउंट खुल गया, और वंस वी गेट टू दिस अकाउंट, वी कैन गो inside the account and we can put as many pins as we want. ठीक है, यहां तक सिंपल बातें हमने की। 18 मिनट हो गया आज के प्रोग्राम में। अब इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यहां तक के लिए, एनी क्वेश्चन, प्लीज गो टू द चैट बॉक्स एंड पुट योर क्वेश्चन। आई वांट to understand if there's any question that you would like me to answer at this stage. So please go to the chat box and put your question. If no, then I'll take it forward. Guys, any question? And if you don't have any question, then please write, do you find this Pinterest relevant in your business? Do you find it relevant? Yes or no? Just put it in the chat box whether you find it relevant or not, and I'll know that you are very much there with me. Okay. I don't see any response from you guys. So if there's no response, I can't take it forward. Okay. All right, fantastic. So let me take it forward from there and understand that once you have followed these 5 steps, अब कुछ आपको Pinterest की बहुत मजेदार बातें बताता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि Pinterest is like a search engine. You know, जैसे Google एक search engine है, तो Pinterest भी एक search engine है। Actually Pinterest social media platform नहीं है, it's a search engine. Now, what is the difference between Google as a search engine and Pinterest as a search engine? The difference is कि Google में आप टेक्स्ट लिखते हैं। Google में आप लिखते हैं कि मुझे मास्टर बैच के बारे में बताइए, मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताइए, और Google आपको पूरे वर्ल्ड का डेटा सर्च करके आपको मैसेज देता है। Google की रिजल्ट वीडियो के फॉर्म में आ सकती है, रिजल्ट इमेज के फॉर्म में आ सकती है। The results from Google can come on text or image or video, but you cannot ask Google a question in the form of an image. And this is the fun, friends. Pinterest को आप इमेज के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक घड़ी पहन रखी है और आप जानना चाहते हैं कि इस तरह की घड़ी और कहाँ मिलेगी, तो आप उस घड़ी की फोटो खींचिए और Pinterest में वो फोटो डाल दीजिए।
तो उससे मिलता जुलता दुनिया भर में जितने भी पिन्स हैं वो पिंटरेस्ट आपको खोज के निकाल के दे देगी। है ना मजेदार बात? तो मान लीजिए कि आप अपने घर की ड्राइंग रूम या आपके घर की डाइनिंग रूम सेटअप कर रहे हो, तो आप अपनी डाइनिंग रूम का फोटो खींच के पिंटरेस्ट में डाल दीजिए, तो उस डाइनिंग रूम को मिलता जुलता जितने फर्नीचर्स की फोटो हैं आपको मिल जाएंगी। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हाउ कैन आई यूज दिस फीचर इन बिजनेस? So friends, if suppose you are selling master batch, and let's assume that you have taken a photograph of anti-static master batch to be used in the trawler industry and the fishing industry, in the fishing nets. So if you take a photograph of the fishing nets where your anti-static master batch has been used and put it on Pinterest, then all those people who will be using such kind of nets, their names will come, their pins will come to you on Pinterest. And then you can click on that pin and go to their website, and so many things you can do. Let me quickly, I mean, I'm sure you love this feature. If you go and practice it, I'm sure you're going to enjoy it. We don't have time enough today to show it to you, but please remember the camera feature of Pinterest. Click a picture, put it on the search engine, and boom, that's where you can get so many leads for your business. So do you find it interesting? Do you find it boom? Do you find the camera pitch feature a boom? Just give me a boom on the chat box if you find this camera feature very useful for your business. Give me a boom. Yes, give me a boom on the chat box if you find the camera feature very interesting. All right, Ritesh is giving me a boom. Reena gives me a boom there. All right, I don't see too many booms. Okay, JJPPL, Abhay, Pramod, Manish. Okay, fantastic. Thank you so much. Let me show you another very important feature. So there is this concept of business account in Pinterest. So you can have a personal account and you can have a business account. The importance of business account is that Pinterest gives you analytics. So normally in a personal account, you do not get analytics, but when you are using a business account, you get analytics. And analytics will show you कि आपका कौन सा पिन अच्छा कर रहा है, यानी आपके कौन से पिन को कितने लोग देखना पसंद कर रहे हैं और आपके कितने सारे पिन हैं जिसको लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं. तो जो पिन्स आपकी पॉपुलर नहीं हो रही है उसको आप रीडिजाइन कीजिए और जो पिन्स आपकी बहुत पॉपुलर हैं उसको और प्रमोट कीजिए. So this is the second way in which you can make use of it in your business. And of course, the next important way is backlink. So every pin can be backlinked. You can link your pins on YouTube. आप देखिए ये जो मेरा फोटो स्क्रीन पे है इसको मैंने सिर्फ 3 दिन पहले पिन किया था and 3 दिन के अंदर I have got 931 followers of this pin. इसका मतलब क्या हुआ कि 941 लोग मुझे इस पिन को फॉलो कर रहे हैं, 931 लोग सॉरी, विद इन 3 days. और जब मैं अपने वेबसाइट पे जाके देखा तो इन 931 लोगों में से करीब 450 लोग मेरे वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं. और कितने दिन में हुआ? ये सिर्फ 3 दिनों में हुआ. तो ये मैजिक है दोस्तों. दिस इज लाइक प्योर मैजिक. The amount of backlinks that you can create and the amount of inbound traffic that you can create on your website through Pinterest is phenomenal. There are people who are creating around 1.5 million followers on their website every month. हर महीने आप करीब 1.5-2 मिलियन फॉलोअर्स आपके वेबसाइट पे क्रिएट कर सकते हो. और मुझे तो बोलते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं. मैंने खुद Pinterest को करीब 3 महीने पहले यूज करना चालू किया हूं और मुझे अब लगता है कि why did I start so late? It's such an important tool. The next use of Pinterest is use it for ideation. आप घर में कुछ काम कराना चाह रहे हैं, आप ऑफिस में कुछ काम कराना चाह रहे हैं, या आप कुछ भी बना रहे हैं, आप ब्रोशर बना रहे हैं, लीफलेट बना रहे हैं, कोई नया फर्नीचर डिजाइन कर रहे हैं, कोई नई ड्रेस, कोई नया कपड़ा, कोई नया जूता, anything in the world you are trying to design and you want to look for new ideas on how to design that dress, Pinterest is a wonderful source for that. आपको ताजुब होगा दोस्तों,
मैं आपको एक मुझे क्विक क्या वो सागा का बात कर रहा डेमोन्स्ट्रेशन हूँ। देना चाहता हूँ इस चीज का गाँव कि गया ये क्या? कितना सिंपल है। Alright, so let me quickly demonstrate. So let me quickly open Pinterest for you. चलिए सीधे चलिए, दमन चलिए। So if I open हाँ? Pinterest, नहीं, झाटू और अगर खिलाता आप में है। से दमन कोई क्या? इच्छुक हैं तो आप मुझे दमन बोल रहे हैं। चैट बॉक्स में लिखिए कि आप किस चीज की डिजाइन आइडिया चाह रहे हैं, और मैं इमीडिएटली आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। वो बुधवार को जब तक होता आप है सोच दमन रहे से हैं चैट पकड़ बॉक्स में लेते लिखने के लिए। ओके, so let me take you to the home page first. So let me go to the home page. 10 मारे थे उसमें से 6 लोग ये भेजे मेरी Pinterest से। अकाउंट खुल जा रही है, मैं pinterest.com में जाना चाहता हूँ। ओके, ऑलराइट, हाँ, वहाँ से बताइए ओके स्थिति हो गई है। ओके। Just give me a minute. I'm just pushing you to the home page so that you can understand what I mean. All right. तो मैं सर्च इंजन में जाऊं और सर्च इंजन में लिखूं पिंटरेस्ट की कि भाई मुझे एक नया व्हाट मुझे एक थ्री पीस सूट बनानी है। Okay, this is not, this is Google. Where is the search engine? Okay, let me go to the site. Yeah. तो अगर मुझे मैंने एक नया कपड़ा खरीदा और मुझे एक नया 3 पीस सूट बनाना है, 3 पीस मेल सूट। Okay, so let's see what, look at the designs that Pinterest is able to give me. Can you see those millions of design? और आप यकीन मानिए कि आजकल के सारे डिजाइनर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स और जितने भी डिजाइनर्स हैं, दे आर मेकिंग वेरी एक्टिव यूसेज ऑफ Pinterest। अब ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। सिमिलरली अगर हम कुछ काम की बातें देखें, जैसे मैं ब्रोशर बनाना चाह रहा हूँ, ब्रोशर अपने कंपनी का ब्रोशर बनाना चाह रहा हूँ, और ब्रोशर एंड मास्टर बैच की ब्रोशर बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मुझे Pinterest कितनी मास्टर बैच की ब्रोशर बनाने की डिटेल देता है। ओके, ये कंफ्यूज हो गया, ये शायद मास्टर बैच एंड ब्रोशर को नहीं समझ पा रहा है। तो if I just put brochure and if I put brochure design layout, see now I'm getting so many options for brochure. Can you see if I scroll down, I can do it for the next 1 hour and I'll keep on getting different designs for brochures. अब मान लीजिए कि आपको ये डिजाइन बड़ा अच्छा लग रहा है एंड यू वांट टू नो मोर डिटेल अबाउट इट, तो ये डिजाइन अगर अच्छा लग रहा है आप इसको सेव कर लीजिए, तो ये आपके बोर्ड पे सेव हो गया। या अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको डबल क्लिक कर लीजिए, ये खुल जाएगा। और ये ब्रोशर की डिजाइन किसने बनाई है? creativemarket.com ने बनाई। आपको अच्छा लगा, आप फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर लीजिए, आप इनकी वेबसाइट में जाके चेक करना चाहते हैं आप इनकी वेबसाइट में चले जाइए और आप देख पाएंगे। तो यहां से मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि यू कैन, इसी आइडिएशन की कोई लिमिट नहीं है। you can ideate and you can go to any level to get new ideas from Pinterest. So 1 मिनट का समय बचा है आइडिएशन के बाद। डोमेन अथॉरिटी, यानी Pinterest also helps you in becoming a domain authority। जैसे मैं सेल्स के फील्ड में डोमेन अथॉरिटी बनना चाहता हूं, तो मेरे बोर्ड पे सिर्फ सेल्स से रिलेटेड पिन्स हैं, और जितने ज्यादा लोग मुझे फॉलो करेंगे, जितने ज्यादा लोग मेरे पिन्स को देखेंगे, उतनी ज्यादा मेरी डोमेन अथॉरिटी बनते जाएगी। सो द नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड द नंबर ऑफ पेज व्यूज विल डिसाइड माय डोमेन अथॉरिटी। और एक क्विक कंपैरिजन लास्ट में करता हूं, समय हो गया है, 4:30 बजे का समय हो गया है, 1 और मिनट लेते, क्विक कंपैरिजन करते हैं कि पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको कोरा के बारे बताया, रेडिट के बारे बताया, और आज Pinterest के बारे बता रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, रेडिट जो है इट इज ए कंटेंट लाइब्रेरी।
Reddit is a very rich depository of content in the form of blogs, and Reddit helps you in creating backlinks by active participation in a community. अगर आपको ध्यान होगा तो we spoke about subreddits, the community of subreddits within Reddit. Quora is a library of questions and respective answers. So how to use Quora? Quora में जाके आप सवाल लिखते हैं, जवाब मिलता है, या कोई और सवाल लिखता है, आप उसको जवाब देते हैं, और इसी के माध्यम से आप बैकलिंक क्रिएट करते हैं ताकि लोग की ट्रैफिक आपके वेबसाइट तक आए. और Pinterest is a image library and it is a search engine where you can search through images. So that's where Reddit, Quora, and Pinterest is different. So I thought that let me just put this slide so that you can differentiate between the two. I'm sure you have some answers, questions, which we will take up immediately after this program. So ladies and gentlemen, we come to the end of today's Sales Ki Pathshala. Thank you very much for listening. I'm sure you have some questions. For those of you who have come here for the first time, Sales Ki Pathshala happens on every Wednesday from 4 to 4:30 on a new topic on sales, followed by questions and answers which are taken live by me during the program. So once again, a big thank you for coming to today's Sales Ki Pathshala, and I'm now going to open up the channels. You can put your video and sound on and you can ask me all the questions.